नमस्ते, खुश रहो बिटियाओं। आई एम देवेंद्र कुमार गौरा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर. Today in this session I am going to deal with the meaning and related explanation of assessment. Meaning, basically the action, any action of assessing someone or something is called assessment, and this is a kind of a method that is basically used to evaluate the academic record of any individual or any student, whatever the skills they or he or she have acquired during the process of teaching or learning. In education, this term assessment refers to a variety of methods or number of tools that any teacher actually is using to access, to check, to measure the academic learning progress of any student. Basically, while assessment are often equated with traditional test, we basically say the standardized test that are developed by testing companies and administered to large population of the students. So educators basically, or teachers, they use a diverse of assessment tool and methods to measure everything from 4-year readiness of the students. So this is basically a very traditional pattern where we check the student's performance, whatever he has learned during that particular period. This process is used or called as a figure out the weakness and strong point of the student, and we say the assessment is systematically a collection of data to monitor success of a programmer or a course in achieving the intended learning outcomes for the student. अगर हम बात करें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के आकलन की दिशा में की गई क्रिया ही आकलन कहलाती है. असेसमेंट मीन्स द लर्निंग बेसिकली. और इस प्रक्रिया में कोई भी शिक्षा नीति, योजना, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, सामग्री, वटेवर, मूल्यांकन का विधि, इन सब को अंतिम रूप देने से पहले इनकलकेट किया जाता है. और इसका असेसमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि उन कमियों को दूर करना, and we do use whatever the relevant teaching materials and evaluation method to basically conduct that particular evaluation. असेसमेंट या आकलन के द्वारा हम बेसिकली कई 3 चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि विद्यार्थी whatever the people has acquired, whatever the outcomes student has gained of the previous learning, and whatever the process is used in this process of learning, that is quite very necessary. And yes, of course, whatever the medium or the way, a method that is used for the learning, these 3 things are quite mandatory for learning. And in this assessment, we basically define, select, collect and analyze the information to boost up, to increase the acquisition ability and overall we can say sustainable development of the people, student or learner. There are आकलन के बारे में अगर हम बात करें तो निष्कर्ष के तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य विद्यार्थी के विकास में वृद्धि करना होता है. और अगर इन सभी इंफॉर्मेशन का सलेक्शन ठीक तरीके से किया जाता है तो ये इसे प्रभावी रूप से
व्यवस्थित रूप से लागू भी किया जा सकता है। आकलन means the level of assessment and the purpose of assessment and the object of assessment. These are the three things that are basically used. आकलन को सामूहिक या व्यक्तिगत तौर पे विकास में वृद्धि हेतु जो लर्निंग की प्रोसेस है उसको अच्छा बनाने के लिए, उपलब्धियों का लेखा जोखा रखने के लिए और उस अध्यापन को उन्नत बनाने के प्रयासों को प्रोत्साहन करने के लिए या कार्यक्रम का मूल्यांकन हेतु सूचना उपलब्ध कराने के लिए ये जो लेवल है असेसमेंट का होना ज़रूरी है। Why we do use assessment? Basically, the main objective is quite stimulative and very constructive. The basic motive behind learning and development that is very stimulative and that will be continuous. Object of assessment, इसमें विषय वस्तु जो कंटेंट है व्यक्ति के नॉलेज, उसके स्किल और बिहेवियर पैटर्न को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो असेसमेंट है उसका रिलेशन ओनली विद्यार्थियों की बौद्धिक जो शक्ति है, उपलब्धि है, वही नहीं है, ताकि उसके अलावा सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, संपूर्ण व्यक्तित्व का जो विकास है, वो उसे ही हम आकलन से संबंधित कर सकते हैं। So this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope, dear students, you are all satisfied with my digital session. If you have any query, any problem related to this session, do mention in the comment section. All the queries will be resolved by the end of the week through the online session only. Thank you very much. एक वीडियो